I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Good afternoon to all. I hope I am audible to you. Okay. So we'll see. What we have seen until today's date, I will explain. So we was started with our pharmacology of ANS. We have seen drug acting on ANS. In that we have seen the sympathomimetic drugs, sympatholytic drugs, parasympathomimetic drugs, parasympatholytic drugs, right? So here today we'll see important points from drug used in the glaucoma. तो आज हम देखेंगे ग्लाउकोमा. So today we'll see the glaucoma and related drugs. So important points from glaucoma, and then we'll see the medicinal chemistry point of view. Same chapter, adrenergic drug from medicinal chemistry point of view. Initially we'll see the drug used in the glaucoma pharmacological point of view. Okay, so everybody requested to join the lecture. So we'll see the drug treatment of glaucoma. Drug treatment of glaucoma. So glaucoma, you might have seen in the your relatives, some grandmothers, some grandfathers, they are suffering from vision problem. They are having some white plaque, white layer on their eyeball, right? And they are not able to see the things properly. So that is a glaucoma. So glaucoma means what? In Marathi it is known as a glaucoma means मोतियाबिंद बोलते हैं उसको. हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद, मराठीमध्ये मोतियाबिंद, मराठीमध्ये मोतीबिंद म्हणतात. आणि then there is another glaucoma is then later on converted into cataract. Cataract is also known as in Marathi Kazbindu. So these two are the diseases of eye, and that leads to blindness. So glaucoma you might have seen in the various जेरियाट्रिक पीपल. तो जो दादा दादी होते हैं उनके ये ग्लाउकोमा वगैरह बहुत सारा होता है, मोतियाबिंद, राइट? सो व्हाट इज मीन बाय ग्लाउकोमा? Glaucoma means it is nothing but it is very common disorder which leads to blindness. It is a important cause for blindness. Glaucoma is a important cause for blindness. So, and glaucoma may be because of the either the person is suffering from hypertension or myopia or family history. They are the risk factor. ग्लाउकोमा किसको होता है ना? अगर किसी को हाइपरटेंशन बहुत टाइम से है, अगर वो उसका कोई मसल का प्रॉब्लम है, मायोपिया है, उसको मसल प्रॉब्लम और मसल डिसीज, एंड इफ एनी मेंबर इज देयर इन अ फैमिली, मतलब जिसके दादाजी को है तो उसके पोते को भी होने का चांसेस होता है. सो ग्लाउकोमा इज द कॉमन कॉज फॉर ब्लाइंडनेस,
and hypertension, myopia, diabetes, they are the risk factor. It may be a genetic also. These are the risk factors. Now, first of all, what do you mean by glaucoma? So glaucoma is nothing but a disease of eye leads to blindness. Glaucoma is a progressive damage to the optic nerve. आपको जो optic nerve होता है that is responsible for the vision. So glaucoma is a condition where there is a progressive damage to the optic nerve. मतलब there is an increase in the damage year by year as the glaucoma proceeds. So optic nerve will be damaged and that leads to blindness. So progressive damage to the optic nerve, and that is because of the increased intraocular pressure. Increased intraocular pressure. इंट्रा मतलब क्या है? इंट्रा मतलब इनसाइड, ऑक्यूलर मतलब क्या? आपका प्यूपिल. So inside the pupil there is a increased pressure. Now what is inside the pupil which increases the pressure? है ना, आपके आंखों के पुतलिया के अंदर अगर प्रेशर बढ़ गया तो ये ग्लाउकोमा होता है. ठीक है, लेकिन अंदर क्या है ऐसा जो प्रेशर बढ़ाता है? ठीक है, तो इन योर आईज देयर इज अ वन फ्लूइड नोन एज aqueous humor. In your eyes there is a fluid known as aqueous humor, and okay, so it is a made inside the eye, it is synthesized inside that, it is a released, and it will flow from the canal of Schellem to the exterior of your eye. तो आपके आंखों से वो बाहर निकलता है, right? So glaucoma is a progressive disorder or progressive disease due to the damage to the optic nerve, and that is because of the damage is because of the increased intraocular pressure. Increased intraocular pressure or tension. Now increased intraocular pressure means more than 21 or you can say more than 30 mm of Hg mercury millimeter. अगर 21 से 30 से 21 से ज़्यादा हो गया या फिर 30 से ज़्यादा हो गया, that leads to glaucoma. So if untreated that might cause permanent damage and blindness to the patient. अगर ये glaucoma ठीक नहीं किया गया, so if there is no treatment of glaucoma, if it is untreated, that can leads to permanent damage to the optic nerve and blindness. So glaucoma is a kind of progressive disease that is because of the increased intraocular pressure that leads to damage to the optic nerve. Okay? Now increased intraocular pressure क्यों होता है? Why there is an increased intraocular pressure? Intraocular pressure क्यों होता है? Because intraocular pressure मतलब क्या? So in your eyes you have fluid known as aqueous humor. In your eyes you have fluid known as aqueous humor. That is a secret. Okay. Now increased intraocular pressure is because of the either increased production. क्यों बढ़ता है pressure eyes में? एक तो intraocular pressure क्यों बढ़ता है इसमें? क्योंकि aqueous humor का production अगर ज़्यादा हो गया या फिर उसका ड्रेनेज कम हो गया. So if there is a increased intraocular pressure is because of the either because of the increased production or decreased drainage. अगर प्रोडक्शन बढ़ गया या फिर ड्रेनेज कम हो गया, इन बोथ केसेस क्या होता है? देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राओक्यूलर प्रेशर. इंट्राओक्यूलर प्रेशर क्यों बढ़ता है किसी चीज़ का? है ना, अगर आपके घर में कुछ पाइपलाइन वगैरह है तो प्रेशर क्यों बढ़ता है ना? प्रेशर बढ़ने का रीज़न दो ही है, एक तो ज़्यादा है ना प्रोडक्शन हो गया या फिर उसका है ना या फिर ड्रेनेज कम हो गया. इंक्रीज्ड IOP is either because of the increased production of aqueous humor or decreased drainage of aqueous humor. So aqueous humor is a fluid present in the eyes. So aqueous humor जो fluid है that is secreted by ciliary body of eye. अगर आपने eye का आपका anatomy physiology पढ़ेंगे, you might see that what do you mean by ciliary body. So when we will see the special sense chapter from HAP, so at that time I will explain you about the anatomy of eye. But यहाँ पे आपको याद रखना है, in the eyes you have aqueous humor that is produced by ciliary body and it will drain through a canal of Schellem. It is a draining through canal of Schellem. Now if there is increased production of aqueous humor or decreased drainage of aqueous humor, so that leads to increased intraocular tension or intraocular pressure, and if this intraocular pressure
is more than 30 or even say more than 21 also. कुछ बुक्स में 21 दिया है, कुछ बुक्स में 30 दिया है. So if this intraocular pressure is more than 30, that causes damage to the optic nerve, and that is known as a glaucoma. So glaucoma is nothing but the most common cause of blindness in the elderly patient. That is risk factors for glaucoma is nothing but the hypertension, myopia, and family history, genetics. Right now, ciliary process, whatever ciliary body is there. So in the ciliary body मतलब क्या? It is a ciliary body is nothing but the in the eyes you have muscles, ciliary process or ciliary body, and it also has some secretory cells. So ciliary body consists of a beta 2 receptor. Adrenergic beta 2 receptor होता है ciliary body के ऊपर. So adrenergic beta 2 receptor is present in the ciliary body, and what is the role? So it causes the vasodilation. So agonist will combine with the beta 2 receptor. Say for example noradrenaline. So noradrenaline is a agonist to the beta 2 receptor. So it will stimulate the beta 2 receptor in the ciliary body in the eyes. Ciliary body जो है ciliary body ciliary process जो है, that will be stimulated. Beta 2 receptor will be stimulated. It causes the vasodilation. So beta 2 receptor is a vasodilatory in the ciliary body and causes the vasodilation. ये vasodilation करता है and that leads to increase the blood flow to the ciliary process. अगर उसके आप पे ज़्यादा blood flow होगा तो क्या होगा? There is a increased production of aqueous humor. So your ciliary body is supplied with the beta 2, or it is innervated with the adrenergic beta 2 receptor, and noradrenaline or adrenergic drugs will combine with the beta receptor and will cause vasodilation. There is increased the blood flow to the ciliary body and increase the production of aqueous humor. Okay? So means यहाँ पे क्या है कि stimulation of beta 2 receptor causes the increase in the production of aqueous humor. तो beta 2 receptor stimulate करने मतलब noradrenaline क्या करता है? फिर noradrenaline will stimulate the formation of aqueous humor. Noradrenaline will cause stimulation or formation of aqueous humor. Aqueous humor production is increased by sympathetic nervous system. So sympathetic nervous system will increase the aqueous humor formation, right? Now again in the ciliary body you have adrenergic alpha 2 receptor. So alpha 2 receptor in the ciliary body causes vasoconstriction and decreases the aqueous humor formation, है ना? तो ये adrenergic receptor alpha जो है वो vasoconstriction करता है, aqueous humor का formation decrease करता है. beta 2 receptor क्या करता है? Stimulate करता है aqueous formation का. मतलब क्या कि ग्लाउकोमा में क्या हो रहा है? ग्लाउकोमा में आपका in the glaucoma you have increased intraocular pressure. Increased intraocular pressure क्यों होता है? Because of the either increased production or decreased drainage. Now production increase करने के लिए कौन responsible है? So sympathomimetic drugs और noradrenaline. So और ग्लाउकोमा का symptoms कैसे कम करेंगे? फिर you can block this beta 2 receptor. You can block this beta 2 receptor. So beta 2 or so beta blockers they are used in the glaucoma. यहाँ पे beta blockers are used in the glaucoma. और alpha 2 का रोल क्या है? It causes vasoconstriction. It will already decrease your production. So stimulant of alpha 2. तो alpha agonist. यहाँ पे आपको दो क्लास मिल जाएंगे कि glaucoma में कौन से ड्रग यूज करना है. So in the ciliary body of your eye you have adrenergic beta receptor which causes vasodilation and increase the production of aqueous humor. So beta blockers can be used in the glaucoma, right? Then alpha 2 receptor is also there. So alpha 2 receptor decreases the production by vasoconstriction effect. So alpha 2 agonist can be used, right? Now another in the formation of aqueous humor requires active transport. Aqueous humor के लिए बनाने के लिए आपको bicarbonate ion चाहिए. So you need a bicarbonate ions for the aqueous humor formation.
है ना, आपके आईज में जो फ्लूइड है उसको बनाने के लिए बाइकार्बोनेट आयन लगता है. So it requires a active transport of bicarbonate ion, and that is provided by your carbonic anhydrase. वहाँ पे आइज में एक एंजाइम होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेस. कार्बोनिक अनहाइड्रेस इज द एंजाइम which catalyzes the formation of carbonic acid from carbon dioxide and carbon dioxide and water. When carbon dioxide and water they are condensed, there is a carbonic acid formation, and from carbonic acid bicarbonate ions are made. So carbonic anhydrase enzyme having role in the formation of aqueous humor. तो aqueous humor formation के लिए क्या है कि कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंजाइम लगता है. कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर अगर यूज करेंगे तो दैट विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्यूस ह्यूमर. तो कार्बोनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर विल डिक्रीज द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, राइट. मतलब यहाँ पे और एक क्लास आपको मिल गया है. पहला क्लास कौन सा है, बीटा 2 है ना, बीटा एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉक, बिकॉज बीटा 2 रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द सिलियरी body, and stimulation of beta 2 receptor causes vasodilation and increase in the aqueous humor formation. So beta blocker will decrease the aqueous humor formation. Alpha 2 receptor causes vasoconstriction and decrease in the aqueous humor formation. So agonist, alpha agonist are used to decrease the aqueous humor formation, right. So alpha agonist, beta blocker and carbonic anhydrase inhibitor. So three classes of drug that can be used in the glaucoma. ठीक है. Now mitotics, next one is a myotics. Myotics means what? So you know, if there is an increase in the pupil size of your eye, it is known as a mydriasis. अगर कोई ड्रग आपका pupil size बढ़ाता है, so that is known as a mydriasis. So if any drug decreases the pupil size of your eye, known as a myotics. So now myotics, what they will do? Myotics, they decrease the pupil size and they increases the drainage of aqueous humor. They increases the drainage of aqueous humor through the canal. Okay. So by constricting the pupil and opening the iridocorneal angle, so they increases the outflow of aqueous humor. So here you got the 4 classes. देखो, beta 2 and beta blockers, they are used in the glaucoma. Alpha agonists, they are used in the glaucoma. Carbonic anhydrase inhibitors are used in the glaucoma. Then mitotics are also used in the glaucoma. Then again prostaglandin analogs are also used in the glaucoma. Okay. Next, there are 2 type of glaucoma. यहाँ पे glaucoma का 2 type होता है. There are 2 type of glaucoma. First one is known as a acute or congestive or narrow angle or closed angle glaucoma. Acute congestive or also known as a narrow angle glaucoma, also known as a closed angle glaucoma. तो 2 glaucoma होता है. एक होता है acute congestive, है ना, और narrow angle और closed angle, एंड दूसरा होता है chronic simple और wide angle और open angle. ठीक है. देखो, acute congestive, सेकंड होता है chronic simple. ना, फर्स्ट को ही बोलते हैं अपन नैरो एंगल, सेकंड वाले को बोलते हैं वाइड एंगल. फर्स्ट वन को ही अपन बोलते हैं क्लोज एंगल, इसको बोलते हैं ओपन एंगल. देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्लाउकोमा, एक्यूट कंजेस्टिव और नैरो एंगल और क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा. इसमें क्या होता है कि इन दिस आइरिस, है ना, जो आइरिस आपका आइरिस विल ब्लॉक द एक्वियस ह्यूमर. Iris will block the aqueous humor drainage, the canal of Schellem. Canal of Schellem जो है आइज में, जिससे aqueous humor आउटफ्लो होता है, आइज से बाहर आता है. तो in acute congestive or narrow angle or closed angle glaucoma, there is a blockage of drainage of aqueous humor by the iris at the canal of Schellem, which leads to increased intraocular pressure. And acute congestive or narrow angle or closed angle glaucoma needs immediate treatment. ये हो गया फर्स्ट. सेकंड क्या है, क्रोनिक एंगल, है ना, क्रोनिक सिंपल और वाइड एंगल और ओपन एंगल ग्लाउकोमा. दिस टाइप ऑफ ग्लाउकोमा डेवलप स्लोली. सो स्लो onset of development,
and needs a long term treatment and even surgery is preferred. इसमें ऑपरेशन भी करना पड़ता है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ता है. There are two type of glaucoma. First one is known as acute congestive glaucoma और narrow angle glaucoma और closed angle glaucoma. इसमें क्या है कि there is a blockage of drainage of aqueous humor by the iris through a canal of Schellem, which leads to increase the intraocular pressure and it needs immediate treatment. Second type of glaucoma is nothing but the chronic simple, also known as a wide angle glaucoma, also known as open angle glaucoma. So it develops slowly, so slow onset and needs a long term treatment, and even surgery is preferred option over here. Surgical intervention is a preferred option, right? दो टाइप का होता है glaucoma. Now drugs used in the glaucoma, drugs either decreases the secretion of aqueous humor. कौन से ड्रग aqueous humor का secretion कम करते हैं? तो beta blockers. So drug will act in a different way. So drug may decrease the formation of aqueous humor, or drug may increase the outflow or increase the drainage of aqueous humor. यहाँ पे ग्लाउकोमा क्यों हो रहा है? क्योंकि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ा है. इंट्राओकुलर प्रेशर क्यों बढ़ा है? एक तो ज़्यादा सिंथेसिस हो गया किसका, एक्वेस ह्यूमर का, या फिर उसका ड्रेनेज कम हो गया. तो आपको ऑप्शन क्या है फिर? यू कैन डिक्रीज द सिंथेसिस और यू कैन इंक्रीज द ड्रेनेज, है ना. जो चोकिंग हो चुका है उसको खुला कर दो, है ना. तो ड्रग आइदर डिक्रीज द सिक्रेशन, पर्टिकुलरली बीटा ब्लॉकर्स, अल्फा एगोनिस्ट. बीटा ब्लॉकर जो है, अल्फा एगोनिस्ट जो है, बीटा ब्लॉकर, अल्फा एगोनिस्ट, कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो दे विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ aqueous humor. So drug that decreases the formation of aqueous humor, beta blockers, alpha agonist and carbonic anhydrase inhibitor. Or drug may act via either increase in the outflow or increasing the drainage. So drug may increase the drainage of aqueous humor. So for example, mitotic drugs, cholinomimetic drugs, and adrenergic, diphenhydramine, prostaglandins analogs, they increases the aqueous humor drainage. तो यहाँ पे दो टाइप के ड्रग है. सम ड्रग्स दे इंक्रीजेस द ड्रेनेज, सम drugs they will decrease the formation of aqueous humor. So those two type of drug mostly used in the treatment of glaucoma, right? So you can see over here. So in a first, है ना, यहाँ पे देखो, okay. So this diagram, this one is known as a lens. ये आपको हो गया lens. This is known as a lens, iris, right? So this is known as a ciliary muscle, and ciliary muscle. This one is a cornea. Lens and cornea के बीच में क्या है? There is a chamber. In between lens and cornea there is a chamber in eyes, and in that chamber you have aqueous humor. Aqueous humor. So aqueous humor is made by ciliary body. Ciliary muscle or ciliary body will prepare or synthesize that aqueous humor. So aqueous humor from ciliary body, so it will enter into the chamber between cornea and lens. So where it is a store, okay. So if there is an increased synthesis, so pressure will be increased. If there is a decreased drainage, now this aqueous humor is drained by canal of Schellem, है ना. तो मतलब aqueous humor कौन बनता है? ciliary body और ciliary muscle, तो है ना, वो वहां से फ्लो होके द चेम्बर में जाता है. कौन से? चेम्बर बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस. यहाँ पे एक्वेस ह्यूमर, वहाँ पे है आपके पूरा, राइट. तो एक्वेस ह्यूमर ड्रेन कहाँ से होता है? कैनल ऑफ शेलेम, राइट. तो नाउ इफ देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और डिक्रीज्ड ड्रेनेज, सो व्हाट विल हैपन? देयर इज इंक्रीज्ड इंट्राओकुलर टेंशन, दैट इज नोन एज अ ग्लाउकोमा. अगर ये बढ़ गए तो क्या होता है? ग्लाउकोमा, ठीक है. तो आपको दिखना प्रॉपर्ली बंद हो जाएगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाएगी. तो you can see over here same thing.
So this one is your lens, and this one is a where aqueous humor is stored. So canal of Shalem, which is a canal for outflow of that aqueous humor. Now drugs used in the glaucoma. देखो drugs used in the glaucoma. Question classification के ऊपर आता है, important है. So drugs used in the glaucoma. So drugs में either decrease the formation of aqueous humor. देखो पहला क्लास है drug which decreases the aqueous humor formation. Second class है drug which increases the aqueous humor outflow. So first class drug which decreases the aqueous humor formation. फॉर्मेशन कम करने वाले. सेकंड क्लास क्या है, जो आउटफ्लो बढ़ाते हैं, मतलब उसका ड्रेनेज बढ़ाते हैं. सो ड्रग विच इंक्रीजेस द ड्रेनेज. तो फर्स्ट क्लास ड्रग विच डिक्रीजेस द एक्वियस ह्यूमर फॉर्मेशन. इन दैट यू हैव बीटा ब्लॉकर्स एंड अल्फा 2 एगोनिस्ट, राइट. एंड थर्ड क्लास आएगा आपका कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर. बिकॉज क्या है, बीटा ब्लॉकर्स आर बीटा रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द सिलियरी मसल which causes vasodilation and there is a formation of aqueous humor. Alpha receptor is there, alpha receptor which causes vasoconstriction and decrease the formation of aqueous humor. Carbonic anhydrase enzyme is very important for formation of bicarbonate and uptake of bicarbonate. So it will also carbonic anhydrase will also increase the aqueous formation. So that's why beta blockers, so that will block the beta receptor and no vasodilation, no aqueous humor formation. So beta blockers, in that also दो क्लास होता है, कार्डियो सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर. You can say beta 1 receptor blocker. So example is a betaxolol and levobetaxolol. They are used in the glaucoma. बाकी ड्रग भी यूज कर सकते हैं, but they are not used. They are used in the hypertension and all that. So betaxolol and levobetaxolol. Non-selective beta blocker, in that you have timolol, levobunolol and carteolol, levobunolol and timolol. They are the non-selective beta blockers. देखो इसमें अल्फा एगोनिस्ट में देखो, अल्फा एगोनिस्ट ब्रिमोनिडिन and apraclonidine. Now it is apraclonidine क्या है, it is a analog of clonidine. तो clonidine है अल्फा 2 एगोनिस्ट, उसका ही ये क्या है, apraclonidine. फिर कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर में आता है आपका एसिटाजोलामाइड, कॉन्ट्राजोलामाइड, एसिटाजोलामाइड. सो कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर एसिटाजोलामाइड. देन उसका ही छोटा भाई है डोरजोलामाइड, और उसका ही और एक तीसरा है ब्रिंजोलामाइड. Acetazolamide, dorzolamide, brinzolamide, carbonic anhydrase inhibitor. Now all these beta blocker, alpha 2 agonist, carbonic anhydrase inhibitor, they will decrease the formation of aqueous humor. Now drug which increases the outflow. अगर आप फॉर्मेशन कम नहीं कर सकते तो आप ड्रेनेज बढ़ा दो. तो ड्रग which increases the aqueous humor outflow. So drug which increases the aqueous humor outflow. So first is a trabecular outflow. Drug which increases the trabecular outflow, उसमें mitotic drug है, so they will decrease pupil size. में पिलोकार्पिन आएगा आपका, फार्मास्यूटिक में आएगा, कोलिनर्जिक ड्रग है. तो ड्रग cholinergic drug which increases the trabecular outflow, outflow of aqueous humor, ड्रेनेज बढ़ाएंगे, trabecular outflow. So pilocarpine, फार्मास्यूटिक में, उसमें अल्फा 2 एगोनिस्ट भी आता है, डिपीवेप्रिन है ना, डिपीवेप्रिन ना, अल्फा एगोनिस्ट उसमें आता है डिपीवेप्रिन. देन विवोस्क्लेरल outflow, the drug which increases the vivo-scleral outflow. तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग आता है ना, लेटानोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट.
लेटेनोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट. सो याद रखना है. सो ड्रग विच इंक्रीजेज द आउटफ्लो ऑफ ह्यूमर, एक्वियस ह्यूमर. सो फर्स्ट वन इज द ट्रैबेकुलर आउटफ्लो. कौन बढ़ता है? कोलिनोमाइमेटिक्स एंड कोलिनोमाइमेटिक्स एंड एड्रेनर्जिक्स. जैसे कोलिनोमाइमेटिक्स में रहेगा पिलोकार्पिन, फार्मास्यूटिकमाइन. अल्फाडो एगोनिस्ट में रहेगा डिपिवेप्रिन. एंड ड्रग्स विच इंक्रीजेस द विवोसैक्रल आउटफ्लो. सो इन दैट प्रोस्टाग्लैंडिन अनलॉक. इसमें लैंटेनोप्रोस्ट एंड बीमाटोप्रोस्ट. दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. ठीक है. सो विल सी द नाउ नेक्स्ट समरी ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. तो ग्लाउकोमा के ऊपर आपको मैक्सिमम आ जाएगा एक आध क्वेश्चन. तो एक आध क्वेश्चन के लिए ये पूरा 45 मिनट का लेक्चर है. समरी ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. समरी ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा मतलब डिफरेंट ड्रग्स यूज्ड इन द ग्लाउकोमा कौन से है, उसका मैकेनिज्म, एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है, व्हाट काइंड ऑफ क्लासेस ऑफ ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. तो फर्स्ट क्लास माइटोटिक ड्रग्स. फर्स्ट क्लास इज द माइटोटिक ड्रग्स. मायोटिक ड्रग्स. मायोटिक मतलब क्या है? ड्रग विच डिक्रीजेस द प्यूपिल साइज. मायोटिक मतलब क्या? ड्रग विच डिक्रीजेस द प्यूपिल साइज. Myotic drugs in that there are two classes. Directly acting muscarinic agonist मतलब क्या? पैरासिम्पेथोमाइमेटिक. डायरेक्टली एक्टिंग मस्करिनिक एगोनिस्ट मतलब पैरासिम्पेथोमाइमेटिक. एंड सेकंड होता है इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब एसिटिलकोलिनेस्टरेज इनहिबिटर्स. कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर रिवर्स वाला. सो डायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक दैट इज अ पिलोकार्पिन. एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग कौन होता है? एंटीकोलिनेस्टरेज. फार्मास्यूटिकमाइन इज देयर एंड इकोथायोपेट इज देयर. इकोथायोपेट क्या है? इट इज अ पेस्टिसाइड, वी हैव सीन ऑलरेडी. नाउ दिस ड्रग क्या करते हैं? ऑल दिस ड्रग पिलोकार्पिन, फार्मास्यूटिकमाइन, इकोथायोपेट. so they increase the trabecular outflow of aqueous humor. That's why that's how they decreases the intraocular tension. So myotic में आपका आएगा पिलोकार्पिन, फार्मास्यूटिकमाइन, इकोथायोपेट. they will increase the trabecular outflow of aqueous humor and they will decrease the intraocular tension. now इनके एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं? ब्लरिंग ऑफ विजन. विजन आपका ब्लर होगा, है ना. ब्लर मतलब धुंधला धुंधला दिखाएगा आपको, धुंधला सा दिखाएगा. ब्लरिंग ऑफ विजन ड्यू टू मायोपिया, है ना, ड्यू टू मायोपिया. हेडेक. हेडेक मतलब आपको मालूम है. देन ब्राउएक. ब्राउएक मतलब आपका आईब्रोज जो है वो भी दुखने लगेगा. ब्राउएक मतलब पेन इन द आईब्रोज. देन एंटीकोलिनेस्टरेज लीड्स टू कैटरैक्ट फॉर्मेशन. जो एंटीकोलिनेस्टरेज है फार्मास्यूटिकमाइन, इकोथायोपेट, on long term use they can cause cataract. They are the adverse effect. Now इनके special comments क्या है? Pilocarpine is a short acting and may cause fluctuation in the intraocular pressure. When pilocarpine is used, so it can cause fluctuation in the intraocular pressure and it is a short acting. ठीक है. Lacrimation can cause punctual stenosis of the nasolacrimal system. मतलब अपना जो है ना, आप देखो जब आपको रोना आता है ना, जब आप रोते हो तो वो जो टीयर्स है, वो जो लैक्रिमेशन है, वो आपके इसमें भी आता है, नेसोलैक्रिमल सिस्टम, मतलब वो नाक में भी आ जाता है आपके. तो आपने थोड़ा सा एक क्या होता है, खट्टा खट्टा जैसे टेस्ट भी आता है. तो ये नेसोलैक्रिमल सिस्टम होता है. सो ये ड्रग जो है दे कैन ब्लॉक द पंक्चुअल स्टेनोसिस ऑफ नेसोलैक्रिमल सिस्टम. दीज आर द कमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्लास होता है आपका बीटा ब्लॉकर्स. बीटा ब्लॉकर्स क्या करेंगे? तो बीटा रिसेप्टर इज प्रेजेंट इन द सिलियरी बॉडी, सो दैट कॉजेज द vasodilation and increase in the production of aqueous humor. Obviously beta blockers क्या करेंगे? They will decrease the aqueous humor formation. So beta blockers, but beta blockers are of two type. So non-selective beta blocker and selective beta 1 blocker, also known as cardio-selective beta blocker. तो नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर में आता है एग्जांपल टिमोलॉल इज यूज्ड इन द ग्लाउकोमा, लिहोबिनोलॉल, कार्टियोलॉल, मेटिप्रेनोलॉल एंड कार्डियो सिलेक्टिव में क्या है? बिटॉक्सोलॉल. दे आर द ड्रग यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. so what they do, they will decrease the aqueous humor formation. That is the mechanism of action. now adverse reaction क्या है इनके? allergic
एलर्जिक है ना, एलर्जिक ब्लिप है वो कंजक्टिवाइटिस करेंगे, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. Precipitation of asthma because of the non-selective beta blocker. So they can precipitate the asthma if non-selective beta blockers are used. Stinging and burning in the eyes. These are the adverse effects. So obviously ये non-selective beta blockers they are contraindicated in case of asthma, bradycardia, diabetes and congestive heart failure. इसमें contraindicated. But betaxolol is less prone to precipitate the asthma, but also it has a less efficacy. मतलब betaxolol ज़्यादा अस्थमा का ऊपर कोई मतलब in asthmatic patient it is safe, but efficacy is less. So two classes, mitotics and beta blockers, so they are used in the glaucoma. Now we'll see the next two classes. पहला क्लास हो गया आपका माइटोटिक में कौन सा ड्रग यूज करेंगे, पिलोकार्पिन, फाइसिस्टिकमाइन, इकोथायोपेट है ना. बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव आएगा. माइटोटिक में डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स और डायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स एंड इनडायरेक्टली एक्टिंग पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स. ठीक है, ये हो गया. नाउ नेक्स्ट वन इज अ प्रोस्टाग्लैंडिन F2A एनालॉग, PGF2A एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A एनालॉग. तो PGF2A एनालॉग, प्रोस्टाग्लैंडिन F2A एनालॉग. सो एग्जाम्पल से उनके लैंटेनोप्रोस्ट, बीमाटोप्रोस्ट, ट्रेवाप्रोस्ट एंड टेफ्लुप्रोस्ट, ये सब क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. ऑल दे आर द प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. व्हाट दे विल डू, they will also increase the outflow of aqueous humor. They will also increase the outflow of aqueous humor. So increase the vasoscleral outflow. है ना. तो देखो यहाँ पे प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग. So in this you have lantanoprost, hematoprost, travoprost and tafluprost. So they will increases the you know they will increase the vascular outflow, मतलब स्क्लेरल आउटफ्लो इंक्रीज करता है ना, आउटफ्लो ऑफ एक्वियस ह्यूमर. तो इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, आइरिस पिगमेंटेशन. तो आइरिस के लिए पिगमेंटेशन करेंगे, आइरिस पिगमेंटेशन है ना. ग्रोथ ऑफ आई लैशेज, आपकी जो आई लैश है उसका ज़्यादा ग्रोथ होगा, तो ग्रोथ ऑफ आई लैशेज. लैंटेनोप्रोस्ट कैन कॉज मस्कुलर एडिमा एंड रीएक्टिवेशन ऑफ वेटिस, है ना. मतलब क्या कि आउटफ्लो बढ़ाते हैं, लेकिन ये क्या कर सकता है, मस्कुलर एडिमा कर सकता है, रीएक्टिवेशन ऑफ वेटिस कर सकता है. So they are the drug of choice in a primary open angle glaucoma. जो प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग है, they are the drug of choice in a primary open angle glaucoma. तो 3 क्लास हो गए आपका. 4 क्लास देखो, अल्फा 2 एगोनिस्ट. अल्फा 2 रिसेप्टर कहाँ पे होता है, इन सिलेरी बॉडी. सो व्हाट विल कॉज इट, ये क्या करता है, वैसोकंस्ट्रिक्शन. इट विल डिक्रीज द फॉर्मेशन ऑफ एक्वियस ह्यूमर. तो अल्फा 2 एगोनिस्ट जैसे apraclonidine and brimonidine. Apraclonidine and brimonidine, they will decrease the formation of aqueous humor. They also can cause a lid retraction, dry mouth, ocular burning and allergic conjunctivitis. ये adverse effect है. Brimonidine is less likely to cause ocular allergy. All of these can cause severe depression and apnea in the neonates. ये दोनों बेटा क्या कर सकते हैं, apnea कर सकते हैं in the neonate. apnea मतलब क्या, absence of breathing. apnea in the neonates, absence of breathing. So all these can cause apnea in the neonates. जो नए बच्चे
इसमें एपनिया कर सकती है, राइट. सो वी हैव सीन द alpha 2 agonist. Third one is alpha 1 agonist. Alpha 1 agonist. Alpha 1 agonist भी सेम करेंगे. So alpha 1 agonist में क्या है, DP heparin and adrenaline. So again they will increase the trabecular vascular outflow. So they also has adverse conjunctival hyperemia. Conjunctival hyperemia मतलब ये क्या करेंगे, रेड आइज करेंगे. कंजेक्टिवल हाइपरेमिया, ऑक्यूलर एलर्जी इज देयर. एंड लास्ट होता है आपका कार्बनिक अनहाइड्रेस इनहिबिटर, डोरजोलामाइड एंड डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड और एस्टाजोलामाइड, तीनों. तो देखो यहाँ पे जो कार्बनिक अनहाइड्रेस है, कार्बनिक अनहाइड्रेस, दिस एंजाइम इज प्रेजेंट इन योर किडनी. ये एंजाइम कहाँ पर होता है, किडनी में होता है, किडनी. This is present in the eyes and carbonic anhydride is also present in the brain. Carbonic anhydride यहाँ पे होता है kidney, eyes and brain, है ना. Now carbonic anhydride is in the kidney responsible for the diuresis. Carbonic anhydride is in the kidney responsible for the diuresis. So that's why carbonic anhydrates are also used as antidiuretics. Okay. So carbonic anhydrates in the eyes responsible for the increase in the intraocular pressure, formation of aqueous humor. So carbonic anhydrase inhibitor are useful in the glaucoma. Okay. Carbonic anhydrase inhibitor है ना, useful in the glaucoma. Carbonic anhydrase enzyme is also present in the brain. ब्रेन में भी होता है. ब्रेन में क्या रोल है, so it is related with the epilepsy. So increase the activity of carbonic anhydrase in the brain can cause epilepsy. So carbonic anhydrase are also used as a anti-epileptic. यहाँ पे तीन यूज है कार्बनिक anhydrase का, क्या, डायूरेटिक है ना, इन ग्लाउकोमा एंड एंटी-epileptic. Remember acetazolamide. Acetazolamide is used as a diuretic, also used in the epilepsy and also it is used in the glaucoma. तो ये तीन क्लासेस है उनकी. So what carbonic anhydrase will do? So they will decrease the aqueous humor formation. They will decrease the aqueous formation. Adverse effect क्या है इनके, ocular allergy, corneal edema and bitter taste in the mouth. Bitter taste in the mouth. These are the drugs. Carbonic anhydrase alpha agonist, prostaglandin analog और बाद में आपका क्या है, माइटोटिक्स है ना, कोलिनर्जिक ड्रग्स. इसके बाद में बीटा ब्लॉकर्स. दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. इतने ही ड्रग्स है. नाउ यू कैन सी अगेन हियर ड्रग्स यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. देखो पहला क्लास है बीटा ब्लॉकर. इसमें क्या है, टिमोलॉल, बिटॉक्सोलॉल है ना, कार्टियोलॉल एंड लिवोबुनोलॉल. तो ये ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर्स. इसमें कुछ क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, कुछ सिलेक्टिव है. तो व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट, conjunctival irritation मतलब conjunctivitis and redness of eyes, also causes the discomfort in the eyes. Remember they are the first line drug used in the glaucoma. Beta blockers are the first line drug used in the glaucoma. No meiosis, hence no headache and brow-ache. ये meiosis नहीं करते, that's why no headache and no brow-ache. No meiosis, no headache and no brow-ache. मतलब आपके सिर में दर्द नहीं होगा, आपके आईब्रोज में दर्द नहीं होगा, राइट. कोलिनर्जिक ड्रग्स आल्सो यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. माइटोटिक्स, इसमें आता है पिलोकार्पिन एंड कार्बेकॉल. तो दे कैन कॉज कॉर्नियल इडिमा, स्पाज्म ऑफ अकोमोडेशन, हेडेक, ब्रोएक एंड मायोपिया. दे आर यूज्ड अलोंग विद द बीटा ब्लॉकर्स, है ना. इसमें आपको फाइसोस्टिगमाइन, निकोथायोपेड, मतलब दे आर द डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. पिलोकार्पिन, कार्बेकॉल आर द डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग. ये है इनडायरेक्टली एक्टिंग. इनडायरेक्टली एक्टिंग मतलब क्या, दे आर द कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर, फाइसोस्टिगमाइन एंड निकोथायोपेड. तो यहाँ पे भी इनके एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्रोएक, कैटरैक्ट, रेटिनल डिटैचमेंट. देन एड्रेनर्जिक ड्रग, नेक्स्ट क्लास आएगा एड्रेनर्जिक ड्रग्स. इसमें आएगा आपका डीपी वेपरिन एंड एड्रेनालिन.
They can cause adverse effect like conjunctival redness, photosensitivity, and allergic reaction. They are the second line drug in the glaucoma. First line drug कौन है? Beta blocker. They are the second line drug and may be combined with the beta blockers. Now alpha agonist, apraclonidine and brimonidine. Apraclonidine and brimonidine. Apraclonidine and brimonidine. तो conjunctival redness इनका भी adverse effect है, photosensitivity. They are having higher topical activity than clonidine. Apraclonidine is having higher topical activity than clonidine. नेक्स्ट होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनहिबिटर. इसमें आता है आपका एस्टाजोलामाइड, मिथाजोलामाइड, डोरजोलामाइड, ब्रिंजोलामाइड, एस्टाजोलामाइड एंड मिथाजोलामाइड. सो दे कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, एनोरेक्सिया एंड ड्राउजीनेस. एनोरेक्सिया मतलब क्या? भूख न लगना. So they are also second line drug given orally to release. Slow release of acetazolamide is better tolerated. Topically, dorzolamide is now used. It has a less adverse effect. So this will end your drug used in the glaucoma. And I hope drug used in the glaucoma सबको समझ में आया होगा. तो ये छोटा सा चैप्टर है. You can expect one question. इसमें से ज़्यादा एक आधा क्वेश्चन आ सकता है आपको. लेकिन ग्लाउकोमा इम्पोर्टेंट है. ग्लाउकोमा causes, types of glaucoma, classification of drug used in the glaucoma, है ना, और individual drugs we have seen. ठीक है. Now we'll see the next part, that is nothing but the medicinal chemistry of sympathomimetic drugs. Medicinal chemistry of sympathomimetic drugs. Right. So we have seen the adrenergic drug from pharmacology point of view, cholinergic drug also from pharmacology point of view. So here we'll see same chapter from chemistry point of view, right? Same chapter from chemistry point of view. So medicinal chemistry of sympatholytics. Medicinal chemistry of sympatholytics. And medicinal chemistry of sympatholytics. सबसे पहले क्या है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम. दे आर द गिफ्ट ऑफ गॉड टू ह्यूमन बीइंग्स because these are the two systems which controls the different systems of your human being, like cardiovascular system, bronchial smooth muscle tone, muscular and metabolic symptom, है ना. तो ये sympathetic nervous system, parasympathetic nervous system, they are the gift of God. So sympathetic nervous system prepares you for either fight or flight, and parasympathetic nervous system prepares you for energy conservation, right? So the neurotransmitter for sympathetic nervous system is a noradrenaline or norepinephrine. No. Then sympathomimetics मतलब क्या है? These are the drugs which will mimic the responses or which will copy the responses which are produced by after stimulation of sympathetic nervous system. So number of drugs which produces or which mimic, which copy the responses produced by the noradrenaline or adrenaline, known as the sympathomimetics. We have already seen the pharmacology, right? Now these drugs, they will have structural resemblance. जो sympathomimetic drugs रहेंगे, they will have structural resemblance. So sympathomimetic drugs, they have structural resemblance, मतलब क्या? Structural similarity with the noradrenaline. So these drugs will have structural similarity with the noradrenaline and adrenaline. Therefore, they are used to mimic or alter the physiological functions associated with the sympathetic nervous system. Sympatholytic मतलब क्या? These are the drugs which will block, which will stop, which will abolish the responses produced by noradrenaline. ये क्या करेंगे? They will inhibit the actions produced by sympathetic nervous system. And that's why they are known as a sympatholytic. They are known as a sympatholytics. And sympatholytics. These drugs, they are clinically used in the hypertension. Sympathomimetic or sympathetic drug acting on sympathetic nervous system, they are used in the treatment of hypertension, in the asthma, various allergic conditions, है ना. आपका बाद में प्रोस्टेट हाइपरप्लासिया, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपर कैंसर,
है ना, उसमें भी यूज करते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में यूज करते हैं बहुत सारे, है ना। बीटा ब्लॉकर्स के तो बहुत सारे यूज है। बीटा ब्लॉकर्स जब आपको आता है कि बीटा ब्लॉकर का यूज क्या है, तो बीटा ब्लॉकर का यूज सिर्फ हाइपरटेंशन नहीं है। बीटा ब्लॉकर्स दे आर यूज्ड इन द कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, है ना, मतलब they are used in the hypertension also, they are used in the congestive cardiac failure also, they are also used in the arrhythmia also, है ना, arrhythmia, congestive cardiac failure, angina pectoris। उसके बाद में they are also used in the glaucoma, they are also used in the performance anxiety, they are also used in the migraine, they are also used in the anxiety simple। बहुत सारे uses है ना, बहुत सारे यूज है, there are lot of uses। Most of these drugs have intact or partially substituted amino group. Most of these drugs, chemically, most of these sympathomimetic drugs, they have intact or partially substituted amino group. Hence, they are called as a sympathomimetic amines. They can be called as sympathomimetic amines. इनको sympathomimetic amines क्यों बोलते हैं? Because they have partially or intact substituted amino group, right? So we'll see. So catecholamines means what? Catecholamines means drug which are having catechol nucleus and amine function. So catecholamines क्या है? They have 3,4 dihydroxyphenyl nucleus. They have 3,4 dihydroxyphenyl nucleus, ना, means catechol nucleus. So 3,4 dihydroxyphenyl nucleus or catechol nucleus, you can see over here, इसको अपन बोलते हैं catechol nucleus। This one is a catechol nucleus. So 3,4 dihydroxyphenyl or catechol, or 3,4 dihydrophenyl nucleus or catechol। तो example of catecholamines क्या है? Adrenaline, noradrenaline, है ना, adrenaline को अपन बोलते हैं epinephrine। So adrenaline is also known as epinephrine, noradrenaline is known as norepinephrine, dopamine, they are the naturally occurring catecholamines। naturally occurring catecholamines है, वो न्यूरोट्रांसमीटर है, naturally occurring catecholamines। and isoprenaline also known as isoproterenol, it is a synthetic, you know, synthetic catecholamine। natural catecholamines and synthetic catecholamines। catecholamines मतलब क्या? those which are having catechol nucleus, 3,4 dihydroxyphenyl nucleus। non catecholamines में क्या आता है? they will not have catechol nucleus, they are without hydroxyl group। non catecholamines में ये hydroxyl group नहीं है on a phenyl ring। example of these drug are nothing but the amphetamine, ephedrine, तो देखो catecholamines है ना, तो this is the structure of noradrenaline। structure जो है noradrenaline, structure of noradrenaline ना, इसको अपन बोलेंगे catechol nucleus। what is the noradrenaline? noradrenaline क्या है? तो it is a, यहाँ पे L 1 in 2, ये क्या है? तो 1 बोलने का, तो 2 बोलने का, 1 into 3,4 dihydroxy, 1 into 3,4 dihydroxy phenyl, 2 के ऊपर OH ना, इसलिए 2 अमाइनो इथेनॉल। तो L है ना, नॉरएपिनेफ्रिन और नॉरएड्रेनालिन इज L 1 into 3,4 dihydroxyphenyl 2 अमाइनो 1 इथेनॉल, है ना। डोपामाइन क्या है? डोपामाइन इज ऑल्सो सेम, तो 2 into है ना, इसको बनने का 1, तो बनने का 2 into 3,4 dihydroxyphenyl 1 अमाइनो इथेन, है ना, यहाँ पे फिनाइल लिखना पड़ेगा, 2,3 dihydroxyphenyl 1 अमाइनो इथेन। सो एड्रेनालिन का स्ट्रक्चर ये है, एड्रेनालिन इज जस्ट this there is addition of methyl here, methyl amine is there, that's it। isoprenaline, so there is a isopropyl amine। isoprenaline मतलब क्या है? यहाँ पे isopropyl amine, तो 1 into 3,4 dihydroxy, है ना, 2 into 2 isopropyl amino ethanol, 2 isopropyl amino ethanol, that is the IUPAC name of isoprenaline। ये क्या है? structure of catecholamines, structures of catecholamines, right? structures of catecholamines, catecholamines का structures, right?
कैटेकोलामाइंस मीन्स 3,4 डाइहाइड्रोक्सिल न्यूक्लियस होगा उसमें, एंड नॉन कैटेकोलामाइंस में नहीं होगा, राइट, नॉन कैटेकोलामाइंस में नहीं होगा. कैटेकोलामाइंस आर द सिंथेसाइज्ड फॉर्म, आपको मालूम है, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम फिनाइल अलानिन अमीनो एसिड, दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम L phenyl alanine amino acids, and various enzymes that take participate in the biosynthesis of catecholamines are. तो कैसे बनता है? So पहला क्या है, phenyl alanine is converted into tyrosine by phenyl alanine hydroxylase, then tyrosine is converted into dopa, by tyrosine hydroxylase, or dopa is converted into dopamine by the enzyme dopa decarboxylase, and dopamine is converted into noradrenaline by dopamine beta oxidase. Now noradrenaline is converted into adrenaline by phenylethylamine N-methyl transferase, right? तो वही, ये सब पूरा वही है. Now conversion of tyrosine to dopamine, is a rate limiting step in the synthesis of catecholamines. इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है. After synthesis, catecholamines they are stored in the scientific vesicle, that is a storage house, and when there is a impulse depolarization, there is a release of calcium ion. Calcium ion will bring about the exocytosis of neurotransmitter. So after it release, it is released in the synapse. After release, some part will act on a receptor, postsynaptic receptor, some part will be metabolized, some part will be uptaken. तो न्यूरोट्रांसमीटर जब रिलीज होता है तो उसका वो रिसेप्टर के साथ में एक्ट होते हैं, कुछ अमाउंट उसका रीअपटेक होता है, कुछ अमाउंट उसका मेटाबोलाइज होता है. तो दीज कैटेकोलामाइंस दे आर मेटाबोलाइज्ड बाय दो एंजाइम. देयर आर टू एंजाइम, फर्स्ट मींस माओ मींस मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, सेकंड वन इज अ कॉम्प्ट मतलब क्या है, कैटेकोलामाइन ऑर्थोमेटाइल ट्रांसफरेज. आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ दिस कैटेकोलामाइंस, कि इनका मेटाबोलाइट्स कहाँ पे, दे आर secreted or they are excreted in the urine. Metabolites of these catecholamines are excreted in the urine, and principal metabolite क्या है, 3-methoxy 4-hydroxy mandelic acid. 3-methoxy 4-hydroxy mandelic acid is the principal metabolite. You can see over here, यहाँ पे देखो biosynthesis of catecholamines. Biosynthesis of catecholamines. So they are biosynthesized from phenylalanine amino acid. ये है phenylalanine. तो phenylalanine is converted into tyrosine. पहला स्टेप में क्या है, phenylalanine is converted into tyrosine by the enzyme phenylalanine hydroxylase. Now second step में क्या है, tyrosine is converted into dopa. डोपा मीन्स क्या है, 3,4 डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन. तो फिनाइलएलानिन ये यहाँ पे एडिशन होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप का, फिनाइलएलानिन हाइड्रोक्सिलेज. तो टायरोसिन से डोपा मतलब क्या, डाइहाइड्रोक्सी, मतलब यहाँ पे भी एक ऐड होगा. डाइहाइड्रोक्सी फिनाइलएलानिन. नाउ थर्ड स्टेप, डोपा इज converted into dopamine. Dopa is converted into dopamine by the enzyme dopa decarboxylase. Decarboxylase मतलब क्या है, removal of this COH. You can see you will get dopamine, you will get dopamine. Now dopamine is converted into noradrenaline. Dopamine is converted into noradrenaline by the enzyme dopamine beta hydroxylase. कौन सा हाइड्रोक्सिलेज, बीटा हाइड्रोक्सिलेज. यहाँ पे बीटा पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप ऐड कर देगा. सो नॉरएड्रेनालिन. लास्टली N-methyl transferase, मतलब क्या, नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ट्रांसफरेज, N-methyl transferase ना, दैट विल कन्वर्ट नॉरएड्रेनालिन इनटू एड्रेनालिन. तो ये जो स्टेप है, पहला स्टेप, दैट इज दैट ऑकर्स इन द न्यूरॉन. ये स्टेप न्यूरॉन में होता है ना, ये भी न्यूरॉन में होता है. कहाँ पे होता है आपने ऑलरेडी देखा है, ठीक है. लेकिन ये जो स्टेप है, दिस स्टेप ऑकर्स इन द वेसिकल्स.
डोपामाइन टू नॉर एड्रेनालिन, ये वेसिकल्स में होता है, नॉर एड्रेनालिन टू एड्रेनालिन वेसिकल्स में होता है. We have already seen this. We have already seen this. Now few actions of catecholamines आपको मालूम है. So they have excitation action, excitatory action on the smooth muscles of blood vessel and sweat gland. मतलब क्या, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ाएंगे, वैसोकंस्ट्रिक्शन करके ब्लड वेसल बढ़ाएंगे एंड स्वेटिंग करेंगे. इनिबिटरी एक्शन ऑन जीआईटी स्मूथ मसल ब्रोंकियल ट्रैक्ट एंड स्केलेटल ब्लड वेसल. मतलब जीआईटी का पेरिस्टालसिस कम कर देंगे, ब्रोंकियो डायलेशन कर देंगे एंड स्केलेटल ब्लड वेसल को भी क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे. वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रेशन आर डिक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग. एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रेशन कम कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे डिपेंडिंग ऑन द इनोवेशन एंड ड्रग. दे हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट ऑन हार्ट. तो हार्ट के ऊपर क्या करेंगे, फोर्स ऑफ पोटेशन है ना, ब्लड प्रेशर, फोर्स ऑफ पोटेशन बढ़ा देंगे, हार्ट रेट बढ़ा देंगे, मायोकार्डियल फोर्स है ना. मतलब दे हैव पॉजिटिव आइनोट्रोपिक क्रोनोट्रोपिक एंड टोमोट्रोपिक. रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, डिक्रीजेस द एपेटाइट. इंक्रीज इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करेंगे ज़्यादा. सो इंक्रीज इन द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, skeletal muscle reduction in the free fatty acid and adipose tissue. skeletal muscle के ऊपर क्या है, रिडक्शन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स फ्रॉम एडिपोज टिश्यू. डिक्रीज इन द इंट्राओक्युलर टेंशन, सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स क्या करेंगे, डिक्रीज इन द इंट्राओक्युलर टेंशन, देयरफॉर दे आर यूज्ड इन द ग्लाउकोमा. एग्जांपल क्या है, इपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिल बोरिएट. इपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन, उस इपिनेफ्रिन मतलब क्या, एड्रेनालिन. इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन है ना, इपिनेफ्रिन मतलब एड्रेनालिन. नॉर इपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन. तो इपिनेफ्रिल बोरेट मतलब बोरिक एसिड का सॉल्ट है. बोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स विद द एड्रेनालिन नोन एज इपिनेफ्रिल बोरेट. है ना. डिप्लेवेप्रिन, डिप्लेवेप्रिन मतलब क्या है, इट इज अ पिवेलिक एसिड ईस्टर ऑफ एड्रेनालिन, पिवेलिक एसिड ईस्टर ऑफ एड्रेनालिन. डिप्लेवेप्रिन, डिप्लेवेप्रिन इट इज अ पिवेलिक एसिड ईस्टर. यहाँ पे देखो तो है ना, नॉन कैटेकोलामाइंस में आता है पहला एम्फेटामाइन. एम्फेटामाइन का स्ट्रक्चर देखो है ना, देखो 1 2 3. तो 1 2 3 प्रोपेन, राइट. तो 1 फिनाइल 2 अमाइनो प्रोपेन, 1 फिनाइल 2 अमाइनो प्रोपेन, दैट इज एम्फेटामाइन. एंड इफेटिन का स्ट्रक्चर भी कुछ उसके तरीका है. तो इफेटिन आल्सो हैव सिमिलर स्ट्रक्चर टू एम्फेटामाइन, बट जस्ट डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एक एडिशनल OH ग्रुप है, मतलब है ना. दैट्स व्हाई इफेटिन क्या है ना, देखो 1 2 and 3. तो 2 मिथाइल अमाइनो, 2 मिथाइल अमाइनो फिनाइल फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल. तो इफेटिन इज 2 मिथाइल अमाइनो फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल. उसमें के बाद में डाइपिलवेप्रिन, ये स्ट्रक्चर है, पिवेलिक एसिड कॉम्प्लेक्स है, पिवेलिक एसिड है. इपिनेफ्रिल बोरेट मतलब बोरिक एसिड का कॉम्प्लेक्स है. इपिनेफ्रिन मतलब नॉर एड्रेनालिन प्लस बोरिक एसिड. नाउ यू कैन सी ओवर हियर, skeleton responsible for the sympathomimetic activity. क्या है, इट इज अ बेसिक skeleton responsible for the sympathomimetic activity. कौन सा ड्रग sympathomimetic रहेगा, तो उसके लिए कुछ स्ट्रक्चरल रिक्विजिट होता है. सो इसेंशियल स्केलेटन होता है. सो ए ड्रग है ना, sympathomimetic ड्रग शुड हैव दिस स्ट्रक्चरल फीचर. तो सबसे पहले क्या है कि इट शुड हैव फिनाइल रिंग, इट शुड हैव catechol ring, it should have amine function, and in between
कैटेकोल और फिनाइल रिंग नाम एंड फंक्शन देयर शुड बी 2 कार्बन एटम। मतलब देखो, तो ये है फर्स्ट पार्ट, फिनाइल रिंग और कैटेकोल न्यूक्लियस, कैटेकोल न्यूक्लियस। देन दूसरा है अमाइन, है ना, दूसरा है, तीसरा है आपका इसके दोनों के बीच में 2 कार्बन कनेक्टर, और यहाँ पे एक 4 पॉइंट देखो। डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स like directly acting sympathomimetics, they will have either OH group at C3 at R3 R4, मतलब यहाँ पे OH group रहेगा, यहाँ पे OH group है, मतलब वो कैटेकोलामाइन बन गए। डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग दे विल हैव OH group over here और मैक्सिमम मिथॉक्सी ग्रुप, और यहाँ पे R2 के ऊपर OH group रहेगा। एग्जाम्पल है उनके नॉर एड्रेनालिन, एड्रेनालिन, आइसोप्रेनालिन एंड टैजोलोल, टैजोलोल। इनडायरेक्ट ड्रग में क्या रहेगा, नो सब्स्टिट्यूट एट R2 R3 R4, R3 R4 के ऊपर OH नहीं रहेगा, बट है ना, R4 के ऊपर OH हो भी सकता है एट बीटा कार्बन, R2 R3 के ऊपर तो नहीं है, R4 के ऊपर OH हो सकता है ना, जैसे एम्फेटामाइन, इफेड्रिन। मिक्स्ड एक्टिंग ड्रग विल हैव स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ बोथ, मिक्स्ड एक्टिंग होता है उनके लिए स्ट्रक्चरल फीचर दोनों भी हो सकता है। टारगेट फॉर ड्रग डेवलपमेंट ऑफ sympathomimetic drug, टारगेट्स फॉर न्यू ड्रग डेवलपमेंट फॉर अल्टरिंग द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक तो क्या है, ड्रग दैट कैन अल्टर द बायोसिंथेसिस ऑफ नॉरएड्रेनालिन, कुछ ड्रग क्या कर सकते हैं, दे कैन अल्टर द बायोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ नॉरएड्रेनालिन, और ड्रग कैन अल्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन, और दे कैन अल्टर द रीअपटेक ऑफ नॉरएड्रेनालिन। Drug can increase or drug can increase the function of noradrenaline, that is they act as a receptor agonist, or they can decrease the function of noradrenaline acting as an antagonist. Drug can alter the post-synaptic regulation of hormone action. These are the targets for sympathomimetic drugs. क्या क्या कर सकते हैं ड्रग्स, सिंपैथोमाइमेटिक ड्रग्स, तो एक तो बायोसिंथेसिस अफेक्ट कर सकते हैं, और ये स्टोरेज का नॉर एड्रेनालिन का स्टोरेज अफेक्ट कर सकते हैं। दे कैन अल्टर द मेटाबॉलिज्म, दे कैन अल्टर द अपटेक ऑफ नॉर एड्रेनालिन, दे कैन कॉज, है ना, they can increase or decrease the activity of noradrenaline by acting as agonist or antagonist. Drug affecting the biosynthesis, ड्रग अफेक्टिंग द बायोसिंथेसिस, तो ड्रग है देखो अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल टायरोसिन, में टायरोसिन बोलते हैं, अल्फा मिथाइल टायरोसिन, सो दैट इनहिबिट द टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम व्हिच इज द फर्स्ट स्टेप इन द बायोसिंथेसिस ऑफ कैटेकोलामाइन्स। तो अल्फा मिथाइल डोपा क्या है, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ नॉर एड्रेनालिन, अल्फा मिथाइल डोपा है, अल्फा कार्बन होता है ना, अमीनो एसिड का ये अल्फा कार्बन होता है जहाँ पे COH and NH ग्रुप होता है। तो कार्बन एट विच बोथ हाइड्रोक्सिल एंड अमाइन फंक्शन आर देयर नोन एज अल्फा कार्बन, तो अल्फा मिथाइल, बाकी ये डाइहाइड्रोक्सीफिनोलानिन, तो अल्फा मिथाइल डोपा, अल्फा मिथाइल डाइहाइड्रोक्सीफिनोलानिन, अल्फा मिथाइल डोपा। देन बेटिलियम टोसाइलेट, बेटिलियम इज नथिंग बट द ड्रग व्हिच इज नोन एज एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर, एड्रेनर्जिक न्यूरॉन ब्लॉकर। मेट्रामिनॉल, ये भी मेट्रामिनॉल क्या है, सेम है, तो 2 अमीनो 1:3 हाइड्रोक्सीफिनाइल प्रोपेनॉल, 2 अमीनो, 2 अमीनो, यहाँ पे कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड, तो 2 अमीनो 1 क्या है कि टी हाइड्रोक्सीफिनाइल, ये प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, मेट्रामिनॉल। बाद में अल्फा मिथाइल डोपा इनहिबिट द डोपा डीकार्बोक्सिलेज, अल्फा मिथाइल डोपा इनहिबिट द डोपा डीकार्बोक्सिलेज, सल्फिराम इनहिबिट द डोपामाइन हाइड्रोक्सिलेज, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट लाइक टायरामाइन इज कॉल्ड एज फॉल्स न्यूरोट्रांसमीटर। कोकेन, ये भी है, कोकेन increases the concentration of noradrenaline by interfering with its uptake. Beryllium is a 2 reuptake inhibitor of noradrenaline. Indirect acting agonist, indirect acting agonist of noradrenaline. Amphetamine, phentermine,
है ना इपेड्रिन। तो एम्फेटामाइन इपेड्रिन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आपने देखा है, ये एम्फेटामाइन है, इपेड्रिन है। देन डोबुटामाइन, इट इज अ डोबुटामाइन, डोबुटामाइन। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोनिडीन, क्लोनिडीन, ये क्लोनिडीन है। इफेक्ट नेम क्या है उसका, है ना, N×2,6 डाइक्लोरोफिनाइल। इमिडाजोल, इमिडाजोल 2 अमाइन, 2, है ना, 2 इंटू N×2,6, यहाँ पे क्लोरीन, क्लोरीन 2,6 डाइक्लोरोफिनाइल 4,4,5 डाइहाइड्रो इमिडाजोल 2 अमाइन, दैट इज अ क्लोनिडीन। ड्रग अफेक्टिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ नॉरएड्रेनालिन, माओ इनहिबिटर्स में आता है आपका इप्रोनियाजाइड। इप्रोनियाजाइड मतलब क्या है, इट इज अ माओ इनहिबिटर। देखो इप्रोनियाजाइड क्या है, देखो इसमें पिरिडिन 2 कार्बोक्सिमाइड, ये पिरिडिन है, पिरिडिन कार्बोक्सिमाइड, आइसोप्रोपाइल, है ना, आइसोप्रोपाइल अमाइन पिरिडिन कार्बोक्सिमाइड, दैट इज इप्रोनियाजाइड। ये परगैलिन, परगैलिन का ये स्ट्रक्चर है, माओ इनहिबिटर्स। सार, है ना, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग, सार क्या है उसका, डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग का ना। बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर सिम्पैथोमाइमेटिक्स, बेसिक स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर सिम्पैथोमाइमेटिक्स इज नथिंग बट दिस। एक पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट, the amino group and aromatic ring should be separated by 2 carbon atom which is essential for activity। और इसके ये लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है। the amino group of aromatic ring should be separated by 2 carbons के ऊपर क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है जीपैट में, है ना। the amino group and aromatic ring मतलब बेंजीन, ये aromatic ring should be separated by 2 carbon, that is essential for activity। presence of हाइड्रोजन, ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है बीटा, करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दैट इज लिवो रोटरी। सो हाइड्रोजन शुड बी लिवो, है ना, ऑन अ बीटा कार्बन, इंक्रीजेस द एगोनिस्टिक एक्टिविटी। ये हाइड्रोजन तो बीटा बीटा चाहिए, बट एंटागोनिस्टिक एक्टिविटी इज रिड्यूस्ड बाय मिथाइल ग्रुप। तो यहाँ पे मिथाइल डालेंगे तो एगोनिस्टिक एक्टिविटी कम होगा। तो हाइड्रोजन शुड बी एट अ लिवो दैट विल इंक्रीज द एगोनिस्टिक एक्टिविटी, and if you apply a methyl group over there that will decrease the agonistic activity। alpha carbon presence of alpha methyl group increases the duration of action। यहाँ पे अल्फा कार्बन ये है, presence of alpha methyl group increases the duration of action making resistant to the MAO। small substituent like methyl, है ना, hydrogen ethyl can be placed on a carbon without affecting the antagonistic activity। मतलब यहाँ पे R2 जो है वहाँ पे आप हाइड्रोजन मिथाइल CH2OH can be placed hydrogen methyl can be substituted on a nitrogen atom without affecting the agonistic activity। मतलब ये जो NH2 है यहाँ पे आप CH3NH लगा सकते हो या फिर डाइमिथाइल लगा सकते हो। सो हाइड्रोजन एंड CH3 कैन बी substituted on a nitrogen atom without altering the agonistic activity। nitrogen atom must be have at least one hydrogen on it, मतलब नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन फ्री होना चाहिए। दैट इज द एगोनिस्टिक, है ना, दैट इज द सार ऑफ डायरेक्टली एक्टिंग ड्रग्स, डायरेक्टली एक्टिंग सिम्पैथोमाइमेटिक्स। तो ड्रग्स, है ना, फिनिलेप्रिन, फिनिलेप्रिन, तो फिनाइल, ये फिनाइल, ये प्रोपोलामाइन,
फेनिलेप्रिन, इथेनॉल, मतलब क्या, वन फिनाइल, वन वन इंटू 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल 2 मिथाइल अमीनो इथेनॉल, इसका ये आयुर्वेद नेम होगा, है ना। 1 into 3 हाइड्रोक्सीफिनाइल, है ना, 2 into मिथाइल अमीनो इथेनॉल, ये होगा फिनाइलिपिन का आयुर्वेद नेम। तो फिनाइल प्रोपेलामाइन, देखो फिनाइल प्रोपेलामाइन, फिनाइल हो गया, ये हो गया प्रोपेल, मिथोक्सामाइन, मिथोक्सामाइन मतलब क्या, फिनाइल प्रोपेलामाइन का स्ट्रक्चर एज इट निकालो, वहां पे सिर्फ मिथोक्सी ग्रुप डाल दूंगा, फिनाइल। नेफाजोलिन है, नेफाजोलिन में एक नेफ्थलीन रिंग रहता है, नेफा, याद रखना, नेफा फॉर नेफ्थलीन, एंड जोलिन मतलब क्या, इमिडाजोल, जोलिन मतलब इमिडाजोल, नेफाजोलिन। सो 2 नेफ्थलीन 1 इल मिथाइल 4 5 हाइड्रो इमिडाजोल, देखो नेफ्थलीन रिंग इमिडाजोल, नेफाजोलिन। जाइलोमिथाजोलिन में क्या रहेगा, इमिडाजोल तो रहेगा, है ना, उसके बाद में जाइलिन रिंग, जाइलिन रिंग किसको बोलते हैं अपन, मिथाइल को अपन जाइलिन रिंग बोलते हैं, जाइलोमिथाइल, ऑल दे आर यूज्ड एज अ नजल डिकंजेस्टेंट, है ना। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, देखो सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, है ना, तो जनरल स्ट्रक्चर तो ये ऑलरेडी है ना। सिलेक्टिव बीटा 2 एगोनिस्ट, देखो पहला है आपका सल्बिटामॉल एंड टर्बिटालिन, ये हो गया सल्बिटामॉल, टर्बिटालिन। सो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ पैरा और मेटा पोजीशन इज important for activity. So hydroxyl group on a phenyl ring is important for activity. यहाँ पे देखो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ पैरा और मेटा पोजीशन इज important activity, जैसे यहाँ पे देखो पैरा पोजीशन में, यहाँ पे मेटा पोजीशन में, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट अ पैरा और मेटा इज important for activity. Methyl on alpha carbon atom increases the selectivity for bronchial beta 2 receptor. Methyl on alpha carbon atom increases the selectivity for bronchial asthma. ग्रुप लगाए ना। थर्ड क्या है, substitution with one of the hydroxyl group on a phenyl ring creates hindrance to the metabolism by COMT. मतलब देखो यहाँ पे substitution of one of the hydroxyl group on a phenyl ring creates hindrance, देखो यहाँ पे मिथाइल हाइड्रोक्सिल ग्रुप मान दिया, this methyl hydroxyl group will create hindrance for the metabolism of this compound by COMT. Yohimbine, nepazolin, patrexan are the example of alpha 2 receptor agonist. Now next is SARP alpha blockers. SARP alpha blockers, ना SARP alpha blockers, ये मुझे लगता है कि अपन 2 पर मिलेंगे, कोई इंटरेस्ट अभी नहीं। टेक दिस इन आफ्टर मी। अल्फा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स बचा है, क्योंकि अल्फा ब्लॉकर्स बीटा ब्लॉकर्स 15-20 मिनट में हो जाता।